Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In previous lecture, we have discussed that what is the TCP IP security overview and why we need securities at different level of TCP IP protocol suite. And in the previous lectures, we have seen that how application and transport layer security can enable by using different protocols. In today's lecture, we will totally discuss the different protocols that enable the network layer security. So let's start with the summary of TCP IP security protocols. We have seen at application layer, the communication protocols, famous communication protocols are HTTP, FTP, and SMTP. And how we have made all these different protocols secure by using different ideas like PGP and SMIME for email security and HTTPS for communication protocol link security. At transport layer, we have different communication protocols that are TCP and UDP. And for this layer, we have SSL, TLS, and SSH protocols to enable the security. At network layer, we have IP as a communication protocol, that is internet protocol. And to enable the security at the network layer, we have a single protocol that is called IPsec. So let's start with the features of IPsec. Actually, IPsec stands for Internet Protocol Security. So let's start with the basic features of IPsec. IPsec is not designated to work only with the TCP as a transfer protocol. It works with UDP as well. So make sure that both protocols can achieve security by IPsec. As you already know, the TCP and UDP both are connection-oriented and connection-less protocols and used by different protocols like ICMP and OSPF. So IPsec security enable for both protocols. IPsec protocols protect the entire packet. आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे entire packet को underline किया हुआ है. Entire packet का मतलब ये है कि हमारा original data के बाद हमारे पास जो next चीज़ है वो उसका TCP का header है और फिर हमारे पास UDP का header है, TCP header है, we have UDP header, and we have different protocols at every layer of TCP and IP, and all those layers also have different headers. So जो IPsec protocol है वो actually क्या करेगा, वो हमें security provide करेगा for entire packet. So IPsec protects the entire packet presented to IP layer, including the higher layer headers. Since higher layer headers are hidden, which carry port number, traffic analysis is more difficult. So take these concepts in your as a food for thought, and let's discuss the next features of this protocol. IPsec works from one network entity to another network entity, not from application process to application process. So आपको पता है कि one entity could be one node to another node, that could be one gateway to gateway, one host to host, or one host to gateway. So there can be any kind of different nodes to communicate. Hence, security can adopt it without requiring changes to individual user computers and application. So आप देख रहे हैं कि मैंने without requiring changes को underline किया हुआ है, यानी IPsec जो है उसके लिए हमें कोई specifically हमारा जो प्रोटोकॉल सूट है उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसे इनकैप्सुलेट कर लेगा पुराने वाले जो हमारा पूरा पैकेट है उसके ऊपर इनकैप्सुलेशन करके IPsec अपने हेडर्स ऐड करेगा और अपनी सिक्योरिटी इनेबल करेगा.
though widely used to provide secure communication between network entities, IP can protect host-to-host security as well. So आपने देखा मैंने यहाँ host-to-host, gateway and host-to-gateway को underline किया हुआ है, तो तीन तरह की different security जो है वो enable कर सकता है IPsec. The most common use of IPsec is to provide the VPN, that is virtual private network, either between two locations or between a remote user and an enterprise network. तो VPN के बारे में तो काफी आप लोगों ने पहले ही सुना होगा इन CCN और IAP कोर्स. उसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है और उससे हमें क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स हासिल हो सकते हैं और हम किस तरह से टनल बना के इनकैप्सुलेटेड एंड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे हुए. और हमारा जो नेटवर्क है वो प्राइवेट नेटवर्क यानी इंट्रानेट की तरह बिहेव कर सकता है अगर हम VPN इस्तेमाल कर रहे हैं. So what we have next, these are some security features relevant to the IPsec, that what security features IPsec provide. So first feature you can see here, that is the confidentiality. तो हमने जब अपनी सिक्योरिटी को पढ़ना शुरू किया था तभी हमने ये देखा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है दो एंटिटीज के दरमियान में सिक्योरिटी से मैसेज क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए. सो हमने डेटा इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी इन दोनों को इंश्योर किया है. So students, we have seen how we have added confidentiality by using encryption and by using the private keys and public keys. So IP security protocol enables communication nodes to encrypt messages. That is the first benefit of using IPsec, and it prevents the eavesdropping by the third parties. That means if there is any intruder or any hacker between the communication, it can detect it and it can also prevent it. Second feature or function of IPsec protocol is that origin authentication and data integrity. So आप ये देख रहे हैं कि जो भी मेजर हमारे जो हमें नीड्स थी हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी की वो इस प्रोटोकॉल से काफी हद तक पूरी हो रही हैं. It provides assurance that a received packet was actually transmitted by the party identified as a source in a packet header. So इस तरीके से नॉन रेपुटेशन का अटैक जो है वो भी नॉन रेपुटेशन जो है वो वायलेट नहीं हो रही, एज वेल एज जो है वो हमें जो इशू था जो हमारी सेंडिंग डिवाइस है उसकी ऑथेंटिसिटी का वो भी पूरा हो रहा है. और हमने डेटा इंटेग्रिटी कैसे ऐड किया ये भी कमिंग स्लाइड्स में भी आप देख लेंगे कि हमने डेटा के को जो है वो किस तरीके से उसके मैसेज डाइजेस्ट प्रिपेयर किया है और आईपी हेडर के अंदर IPsec हेडर के अंदर इसको एनेबल किया है. इट कंफर्म्स दैट द पैकेट हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड और अदरवाइज. सो डेटा इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर करेगा, एज वेल एज की मैनेजमेंट, allows secure exchange of keys, protects against certain type of security attacks such as replay attacks. So key management is the first concern. जब भी हमने encryption और decryption करनी है तो definitely we need secret keys और उसके exchange के लिए भी हमारी help करेगा. So IPsec applicable to use over LANs across public, private, WANs and for the internet. So आप देख रहे हैं कि हर एक तरह के नेटवर्क के लिए IP जो सेक प्रोटोकॉल है वो हमारी हेल्प करेगा. So ये सारे इसके की फीचर की फंक्शंस हैं IPsec प्रोटोकॉल के. So let's check out what is the VPN. That is just a quick revision. आपको पता ही है कि VPN क्या होता है. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में हमारा बल्कि इसको पढ़ने से पहले आपको एक ड्राइंग दिखा दी जाती है. देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एक इंट्रानेट और इंटरनेट एक्स्ट्रानेट का आपको कॉन्सेप्ट होगा. इंट्रानेट जो है वो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मेरे पास सपोज ये मेरी एक कम्युनिकेशन एक मेरी कंपनी है जिसको मैं एक्स कह रही हूँ. इस कंपनी के अंदर जितना भी हमारे पास डिफरेंट नोड्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं एट वन लोकेशन, सपोज इन लाहौर और इन कराची. सपोज ये एक क्लोज्ड रेपोजिटरी है, क्लोज्ड एक इन्वायरमेंट है. इस तरह के नेटवर्क को हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं. इस इंटरनेट के लिए बाकी जितने भी नोड्स हैं, अगर मैं कहूँ कि
इंडिया में हैं या लंदन में हैं या किसी और जगह पे हैं, ये सारे उसके लिए एक्स्ट्रा नेट बन जाते हैं। सो इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ये दो जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वीपीएन हमारे से क्या जो है वो फायदा या बेनिफिट हमें दे सकता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा वीपीएन है या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वो ये चीज एनेबल करता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर रिमोट कोई जो है वो मेरा नोड है, सपोज मैं इसको x1 कह रही हूँ, ये इसको इस नेटवर्क के साथ जो मेरा इंट्रानेट है उसके साथ लिंक कर दिया जाता है बाय हाईली इनक्रिप्टेड चैनल कम्युनिकेशन मीडियम एंड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स टू सिक्योर दिस चैनल। और ये बिल्कुल इसका बिहेवियर ऐसे ही होता है जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क का होता है। जैसे कि आप समझेंगे यहाँ पर सपोज मेरे पास ये दो नोड्स हैं ए और बी, इन दोनों नोड्स की जिस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है उसी तरह x1 भी इस नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में जो है वो ये हमें फीचर प्रोवाइड किया जाता है कि हम इंट्रानेट के अंदर और एक्स्ट्रानेट के अंदर कहीं पर भी नोड्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट security protocols. So let's see how this specific working by using the IPsec protocol, by using VPN. Suppose this is my internet. इस पे मेरे हेडक्वार्टर ऑफिस है और हेडक्वार्टर के पास राउटर है विद IPsec। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो IP पेलोड यानी हमारा जो ओरिजिनल डेटा है विद IP हेडर हो रही है। जो हमारे पास ये नोड है हमारा, ये राउटर विद IPsec enabled है, यानी इसमें राउटर क्या आपको पता है कि थर्ड लेयर की डिवाइस यानी नेटवर्क लेयर की डिवाइस है और इस पे भी IPsec इनेबल किया गया। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो दूसरा नोड है यहाँ पर ब्रांच ऑफिस का, उसको भी हमने राउटर विद IPsec इनेबल किया हुआ है। अब जैसे ही ये इस इंटरनेट से जो हमारा इंट्रानेट है उससे इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिक्योर पेलोड भी सिक्योर हो गया, IPsec हेडर ऐड कर दिया जाएगा और फिर IP हेडर भी साथ होगा, यानी एक एक्स्ट्रा एक पूरा कंप्लीट हेडर जो है IP सिक्योरिटी का इस पे ऐड करके इंटरनेट पे भेज दिया जाएगा। इसी तरह हमारा जो एक ब्रांच ऑफिस है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि सेम चीज की गई है। और हमारा जो रिमोट या फील्ड यूजर है वो भी इसी तरीके से कहीं पर भी बैठे हुए लैपटॉप पे IPsec एनेबल करके इस चीज को सिक्योर कर सकता है। So students, this is all about the main working of VPN by enabling IPsec header, and this will add the security at this network. So let's discuss and then let's read the data that was here. Ideally, any institution would want its own private network for communication to ensure the security. However, it may be very costly to establish and maintain such private network over geographically dispersed areas. It would require to manage complex infrastructure of communication links, routers and DNS. So इस चीज से बचने के लिए हम इंटरनेट की सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे और उन सर्विसेज के जरिए से हम अपना प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करेंगे। IPsec provide an easy mechanism for implementing virtual private network VPN for such institution. So VPN technology allows institutions inter-office traffic to be sent over public internet by encrypting traffic before entering to public internet and logically separating it from the other traffic. So how this will be separated? आपको पता है कि ये जो IPsec header है ये जो है वो डिफरेंट होगा बाकी तमाम कम्युनिकेशन से जो कि इंटरनेट के अंदर हो रही है, जो इंट्रानेट के अंदर हो रही होगी। यानी आपके जो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आप देख रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे IP TCP IP पेलोड है, IP हेडर है, TCP हेडर होगा। लेकिन जैसे ही वो इस कम्युनिकेशन जो राउटर है इससे बाहर जाएगी इंफॉर्मेशन, वहां पर एक नया हेडर ऐड कर दिया गया है, दैट इज IPsec हेडर, एज वेल एज जो पेलोड है आपका वो भी सिक्योर कर दिया गया और फिर जो ओरिजिनल आपका IP हेडर था वो इसके साथ अटैच कर दिया गया। So हमें ये फायदा VPN पे हासिल हो सकता है. This is one feature for using the IPsec protocol. So what is the overview of IPsec? IPsec is a framework suited for protocols for providing security at the IP layer. IP layer means network layer के ऊपर ये security add करता है. With the massive growth of internet combined with the inherent security weaknesses of TCP/IP protocol, the need was felt for technology that can provide network security on the internet. So TCP/IP के अंदर भी कुछ चीजें थी, आपने जब इस पूरे प्रोटोकॉल स्यूट को पढ़ा होगा, इसके फ्रेमवर्क को समझा होगा, इसकी हर लेयर के अंदर कोशिश की गई है कि डेटा के पैकेट्स को
सिक्योरिटी के साथ इंश्योर किया जाए, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, नोड टू नोड, गेटवे टू गेटवे, होस्ट टू होस्ट प्रॉपर तरीके से पहुंचा दिया जाए। लेकिन कुछ जगहों पर आपने देखा कि सिक्योरिटी की वायलेशन जो है वो भी हो रही थी जी। तो टीसीपी आईपी के साथ अगर हम आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐड कर दें तो हमारा जो कन्वेंशनल टीसीपी का हेडर है और फिर पेलोड एंड आईपी प्रोटोकॉल हेडर है वो सिक्योर हो सकता है। सो 1994 के अंदर आईएबी दैट इज इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड उसने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी नेम्ड एज सिक्योरिटी इन द इंटरनेट आर्किटेक्चर। And in this report, they have identified the key areas for security mechanism. और यही key areas जो हैं वो IPsec प्रोटोकॉल की तमाम जो आर्किटेक्चर है उसकी बुनियाद जिसने रखी। IAB included authentication and encryption as essential security feature in IP version 6, the next generation IP. Fortunately, these security capabilities were defined such that they can be implemented in both the current IP version 4 and futuristic IP version 6. So 1994 में ये चीज़ जहन में रखी गई थी कि दोनों जो वर्जन्स हैं IP प्रोटोकॉल के वर्जन 4 और वर्जन 6 इन दोनों के ऊपर IPsec जो है वो ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो साथ ही साथ डेटा इंटीग्रिटी एनेबल कर सके। Security framework IPsec was has been defined in several requests for comments RFCs। RFCs जो हैं वो reports के ऊपर दिए जाते हैं और in some RFCs specifies some portion of the protocol while other addresses the solution as a whole। So जो रिपोर्ट 1994 में आई थी उसके ऊपर कुछ प्रपोजल्स दिए गए, कुछ नई वीकनेसेस आइडेंटिफाई की गई और उनको रिमूव करने के लिए डिफरेंट तरीके बताए गए, जिसकी मदद से आईपीसेक जो प्रोटोकॉल है उसको मजीद सिक्योर बनाया गया ताकि कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो भी सिक्योर हो सके और आपका जो एक्चुअल पे लोड या आपका जो मैसेज है जो आपने सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक भेजना है उसको भी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के साथ जो है वो शेयर किया जा सके। सो व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन विद इन आईपीसेक प्रोटोकॉल? तो दो ऑपरेशन है, दो की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला ऑपरेशन है आईपीसेक कम्युनिकेशन। दैट मीन्स हमारे पास जो दो नोड्स हैं कहीं पर भी दुनिया में, उन दोनों को कैसे कम्युनिकेशन चैनल के जरिए से एक लिंक प्रोवाइड किया जाए जो कि ना सिर्फ सिक्योर हो बल्कि इनकैप्सुलेटेड हो और प्राइवेट भी हो। ये तीन चीजें इसमें इंश्योर की गई। दूसरी चीज, तो दूसरा ऑपरेशन है वो है IKE दैट इज इंटरनेट की एक्सचेंज। तो दो काम मेजर आईपीसेक प्रोटोकॉल के हैं, एक तो कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करना, डेवलप करना, सिक्योर करना और दूसरा जो कीज हैं उनको सिक्योरिटी के साथ एक्सचेंज करना। स्पेसिफिकली यहाँ पर पब्लिक या प्राइवेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटरनेट की एक्सचेंज की बात हो रही है। तो जो हमारा ओरिजिनल सोर्स से लेकर ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक जितनी भी की एक्सचेंज, जितने भी नोड्स आएंगे वो सारे इस जो हमारा प्रोटोकॉल है IPsec उसको सिक्योर बनाएगा। So both operations will be required to add the security. So let's start with the IPsec communication. So let's read it. IPsec communication, that is the first function of this protocol. It is typically associated with the standard IP functionality. यानी अगर आप कहें तो अगर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे करना है तो आप लोगों को ये पता है कि डेफिनेटली हमें ये चाहिए कि हमारा सबसे पहले कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट हो। It involves encapsulation, encryption and hashing of IP datagrams and handling all packet processes. So here you can see that we have different highlighted issues and features of any security, like how we will add the encapsulation, how we will encrypt the data, how we will add the hashing for adding the data integrity for the IP datagrams. So IPsec communication में ये पूरे पैकेट के इतने ज़्यादा आपको features नज़र आ रहे हैं, ये ensure करना is not an easier task. It is responsible for managing the communication according to the available security associations as A's between the communication parties.
सो अभी आप लोगों के लिए एक नई चीज, नया जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है, दैट इज सिक्योरिटी एसोसिएशन। इसके नाम से आपको पता चल रहा है किसी लिंक की बात हो रही है, सिक्योरिटी लिंक की बात हो रही है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में मजीद डिटेल बताऊंगी कि व्हाट आर द सिक्योरिटी एसोसिएशंस एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फीचर। सो खैर, अब जो पहली चीज यहाँ पे लिखी गई है वो यही है कि डिफरेंट कम्युनिकेशन जितनी भी पार्टीज हैं उनके दरमियान में एस क्रिएट की जाएं। It uses security protocols such as authentication header AH and ESP, that is encapsulation security payload. So students, ये दो जो आपको नजर आ रहे हैं protocols, authentication header and ESP, that is encapsulated security payload, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं क्योंकि IPsec प्रोटोकॉल के ये दोनों ही बहुत फेमस जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, और सॉरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। तो इंडिविजुअली हम इन दोनों प्रोटोकॉल्स को नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे, खास साथ ही साथ हम ये एसेस के बारे में भी बात करेंगे। IP communication is not involved in the creation of keys or their management. So IP communication जो पहला फीचर है उसमें कोई कीज वगैरह नहीं बन रही, सिर्फ जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें की जनरेट हो रही है, की डेवलप हो रही है। IP communication operation itself is commonly referred as IPsec. सो ये इसको आप जो कम्युनिकेशन है उसको IPsec भी कह सकते हैं। तो IPsec का में अभी इस पूरी चीज को पढ़ के हमें ये पता चला कि IPsec कम्युनिकेशन के लिए पहला काम तो ये है कि आपने एक नोड से दूसरे नोड तक, वो कहीं पर भी दुनिया में पड़ा हुआ हो, उस तक कैसे सिक्योरिटी से आपने एक चैनल क्रिएट करना है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि किस तरीके से आईपी के डेटाग्राम, यानी जो ओरिजिनल डेटा था आईपी और टीसीपी का, उसके ऊपर कैसे इनकैप्सुलेशन, इंक्रिप्शन और हैशिंग ऐड करनी है। तीसरी चीज, ये दो जो प्रोटोकॉल्स हैं एएच और ईएसपी, ऑथेंटिकेशन हेडर एंड ईएसपी, ये दोनों किस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है आईपीसेक कम्युनिकेशन उसको सिक्योर कर सकते हैं। सो पहला ऑपरेशन तो हमारा ये है और इसमें से हमने काफी सारी चीजें जो है वो हाईलाइट की हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो फीचर था वो था, सेकंड ऑपरेशन जो था आईपीसेक प्रोटोकॉल था वो था इंटरनेट की एक्सचेंज, दैट इज आईकेई। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सचेंज के ऊपर ये बात करेगा। सो आईकेई इज द ऑटोमेटिक की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर आईपीसेक। सो दैट इज की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यानी की मैनेजमेंट में आपके जहन में वो सारी बातें आनी चाहिए, हाउ यू विल क्रिएट अ की, हाउ यू विल शेयर अ की, हाउ विल you manage those keys and where you will store it, and how you can create these security certificates for those keys. So key automatic key management protocol, typically key management is not essential for IPsec communication and the keys can be manually managed. So पिछला वाला जो फीचर पड़ा था उसमें तो हमने देख लिया था कि वो की क्रिएट नहीं करेगा बल्कि वो मैनुअली करेगा। लेकिन मैनुअली आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे जो जिस तरह के लार्ज नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनुअल की मैनेजमेंट इज नॉट डिजायरेबल फॉर द लार्ज नेटवर्क, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा हमारे पास नेटवर्क के लोग हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो हम ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आई के ई की मदद से हम ये कर सकते हैं। आई के ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ कीज। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जो IPsec कम्युनिकेशन का ऑपरेशन है उसमें कीज क्रिएट नहीं होंगी। कीज को क्रिएट करने के लिए और कीज को मैनेज करने के लिए पूरा एक अलग ऑपरेशन है जिसका नाम है IKE for IPsec and providing authentication during key establishment process. IKE again have two different protocols, OKLE and SKEME, that is used with already defined key management framework, that is Internet Security Association Key Management Protocol, that is ISA-KMP. So IKE जो है की exchange जो है वो और दो protocols के साथ काम कर रहा होता है। IKA MP is not IPsec specific but provides the framework for creating the SAs for any protocol. S is what the security association. So ये जो protocol था, ये जो नीचे लिखा हुआ है ISA KMP, ये IPsec का part नहीं है लेकिन उसके साथ help कर सकता है SAs को create करने के लिए। So students, अगर इसको हम एक इस IPsec आर्किटेक्चर को
एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर पढ़ें और कंक्लूड करें तो कुछ ये फीचर्स अभी तक हमें जो है वो नजर आए हैं। पहला फीचर ये है जी, तो पहला फीचर इसका ये है कि स्पेसिफिकेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कुछ एरियाज है जैसे कि ऑथेंटिकेशन हेडर है, हमारे पास ESP है, हमारे पास एसेज हैं, हमारे पास IKE है, हमारे पास IPsec कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीजें जो अभी हमने देखी हैं वो उसे देखकर तो यही अंदाजा हुआ कि ये जो प्रोटोकॉल है ये काफी कॉम्प्लेक्स है। दैट इज मैंडेटरी इन IP वेरिएंट 6 एंड ऑप्शन इन IP वेरिएंट 4। सो ये भी बात अभी तक हमने ये भी देख लिया है। इट हैव टू सिक्योरिटी हेडर एक्सटेंशन AH एंड ESP। ये भी हमने जो है वो अभी तक की जो डिस्कशन है उससे ये चीज सामने लेकर आए। Moreover, it has tunnel versus transport mode. अब दो चीजें आपको और यहाँ पे लिख लेनी आपने, that is food for thought. That is IPsec protocol has two modes. One is tunnel and other one is transport mode, and it has security associations. And for security association, we have SPI, XPD, and SAD. And we have authentication header, and we have encapsulated security payload, that is ESP. And we could have different issues relevant to the NAT, that is network address translation. So this is the whole idea of using the IPsec protocol. So let's start with the process, that what is the difference between transport mode and tunnel mode in IPsec protocol. So transport mode is responsible for host to host communication, and tunnel mode or tunneling mode is responsible for host to gateway or gateway to gateway communication. सो आप आपके सामने एक छोटी सी ड्राइंग बनी हुई है, इसको जरा देखें। गेटवे टू गेटवे इनक्रिप्टेड टनल होगी, ए हमारे पास एक नोड है, बी हमारे पास दूसरा नोड है, तो होस्ट से होस्ट कम्युनिकेशन यानी ए टू बी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट मोड, एंड गेटवे 1 टू गेटवे 2 जो कम्युनिकेशन होगी वो जिम्मेदारी होगी हमारे पास टनल मोड की। So you can see by this demonstration that we have two gateways and two nodes, and from node to gateway, that is unencrypted channel, similarly with the B, and we have one encrypted tunnel for gateway to gateway communication. So for gateway to gateway communication, we have our we have our data, original data, TCP and IP header. That was this green blue color uh, distinguish between both responsibilities. So आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा TCP IP का ओरिजिनल हेडर है वो कुछ यहाँ तक है। इसके ऊपर दो हेडर्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि IPsec के हेडर हैं। एक तो AH और ESP हेडर होगा, यानी हम इन दोनों सर्विसेज में से ऑथेंटिकेशन हेडर और ESP में से कोई एक चीज इस्तेमाल करेंगे, किसी एक का हेडर। और ये भी अभी आप आगे देखेंगे कि ये दोनों में से किस सिचुएशन में हम AH का इस्तेमाल करते हैं और किस सिचुएशन में हम ESP को इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो न्यू IP हेडर इसके साथ अटैच हो जाएगा। एक ओरिजिनल IP हेडर था जिसको इनक्रिप्ट कर लिया गया, और एक हमारे पास न्यू IP हेडर है जो कि इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो आपको ये दो डिफरेंट हेडर्स नजर आ रहे हैं, ये IP सिक्योरिटी को ऐड करेंगे फ्रॉम गेटवे टू गेटवे कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। So let's discuss the transport mode. IPsec does not encapsulate a packet received from upper layer. Okay. The original IP header is maintained and the data is forwarded based on original attributes set by the upper layer protocols. So the limitation of transport mode is that no gateway service can be provided. So आप देख रहे हैं system with IPsec. So this node to this node communication, it enable the IP security, IPsec security, and IKE, that was Internet Key Exchange. But there is no mechanism for these routers that perform as a gateway to enable the security between end-to-end security. So importantly, IPsec, if you are using the transport mode, the packet will not encapsulate it. Complete packet will not encapsulate. So this is the highlighted point in transport mode.
अब आपके सामने जो है वो प्रोटोकॉल स्टैक नजर आ रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले डेटा है, उसके साथ टीसीपी आईपी हेडर होगा, जो कि नॉर्मल हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से क्रिएट हुआ। अब फिर क्या किया जाएगा, IPsec आइसोलेट्स आईपी हेडर फ्रॉम अपर लेयर डेटा। तो डेटा और टीसीपी को अलग कर दिया जाएगा और आईपी हेडर को अलग कर दिया जाएगा। फिर आपने देखा कि टीसीपी हेडर और डेटा को इनकैप्सुलेट किया गया है, ये आपको डबल हाईलाइट नजर आ रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें ऐड हुई है। एक चीज तो ये है, एक तो आईपी हेडर हमारा स्टैटिक चलता आ रहा है जो चलना है। एक हमारे पास हेडर IPsec प्रोटोकॉल का यानी आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ऐड हुआ है, जिसमें से ESP और AH दोनों में से जो भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा उसका हेडर आ जाएगा। साथ ही साथ ESP का ट्रेलर आ जाएगा, यानी मैसेज पैडिंग वगैरह या अगर एक्स्ट्रा बिट्स आपने ऐड की हुई है तो वो यहाँ पर ऐड कर ली जाएंगी। और फिर इसको सारे को लिंक कर दिया गया दोबारा। सो ये जो पूरा हमारे पास जो आपको ये नजर आ रहा है पैकेट, जिसमें data is encapsulated and encrypted, TCP header is encapsulated and encrypted, and we have added two different protocols. uh, there is OR between two protocols, that is ESP and or AH, and as well as the ESP trailer. सो इस तरीके से ये जो पूरा पैकेट हमारा क्रिएट हुआ है, डेवलप हुआ है, इसमें एक ही आईपी का हेडर इस्तेमाल हुआ है। इसको आपने ध्यान से जहन में रखना है कि ट्रांसपोर्ट मोड में सिर्फ एक ही आईपी का हेडर इस्तेमाल होता है, क्योंकि टनलिंग मोड के अंदर ये दो आईपी हेडर्स इस्तेमाल होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल, हाई लेवल प्रोटोकॉल IPsec header, and then we have IP header and IP operations. So tunnel mode और टनलिंग मोड, दैट इज द सेकंड मोड ऑफ IPsec। यानी आपने देखना है कि आपने होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करनी है या गेटवे टू गेटवे कम्युनिकेशन करनी है। दिस मोड ऑफ IPsec provides encapsulation services along with other security protocols। आपको पता है कि टनल जो पिछला हमने ट्रांसपोर्ट मोड पढ़ा था उसमें ये सर्विस मौजूद नहीं थी। In tunnel mode operation, the entire packet from upper layer is encapsulated before applying security protocol and new IP header is added. So मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में ये बताया कि ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर हमारे पास एक ही आईपी का हेडर इस्तेमाल होगा, लेकिन टनलिंग मोड के अंदर हमारे पास दो आईपी के हेडर्स इस्तेमाल होंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नोड टू नोड कम्युनिकेशन या होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, बल्कि गेटवे टू गेटवे की बात हो रही है। That is the IPsec aware router on both of the sides, and where we can add the both, we can enable both operations of IPsec. Initially that was IPsec communication and internet key exchange, हम दोनों चीजें इस पे enable कर सकते हैं, as well as uh, we can apply both protocols, either we are using the authentication header or ESP. So what is the tunnel mode? More about the tunnel mode. As far as the endpoints are concerned, they have a different direct transport layer connection. The datagram from one system forwarded to the gateway is encapsulated and then forwarded to the remote gateway. The remote associated gateway de-encapsulates the data and forwards it to the destination, to the endpoint on the internal network. So दोनों जो IP के headers इस्तेमाल किए गए हैं, दोनों ही की अलग इंफॉर्मेशन है। जो इंटरनल IP header है वो ओरिजिनल डेस्टिनेशन को बता रहा होगा, जो एक्सटर्नल IP header आपने ऐड किया है वो आपको जो गेटवे टू गेटवे जो है कम्युनिकेशन तक information exchange करने के लिए इस्तेमाल होगा. So that is the protocol stack of tunnel mode. You can see here that we have two IP headers now. We have a complete header, that was TCP IP header. आपने देखा था पिछले वाले में हमने IP header को अलग कर लिया था, लेकिन यहाँ पर IP header इसके साथ ही रहेगा. इसके साथ फिर ESP AH ऐड हुआ, again ESP trailer ऐड हुआ, sorry ESP trailer ऐड किया गया. फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पूरा जो डेटा है, जो जिस तरह के प्रीवियस वाला था उसमें आईपी हेडर के साथ एक और आईपी हेडर ऐड कर दिया गया और अगेन इसको रीसैम्पल किया गया. सो हैव अ लुक एट this complete protocol stack, where we can see that we have data, that is the original datagram, we had TCP header, we had IP header, that is the original header, that where
is over host, and then we have ESP or authentication, that is IPsec header, and we have a new IP header that describe the gateway IP address and IP information. जब ये गेटवे पे पहुंच जाएगा तो ये आईपी हेडर खत्म हो जाएगा, फिर आगे ईएसपी है और इससे डी इनकैप्सुलेट करके ये देखा जाएगा कि इसने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है। तो अब आपको ये बात पता चली कि टनल मोड में हमें ज्यादा सिक्योरिटी मिल सकती है, ज्यादा हम सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अगेन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें हैं, आइदर फॉर द ट्रांसपोर्ट मोड और आइदर फॉर द टनल मोड। So आप देख रहे हैं inner IP header and outer IP header both have different responsibilities. That is the real IP destination, and destination IPsec entity, that is for the gateway where we want to communicate or link. So students, thank you very much for this session. In this session, let's conclude this session. In this session, we have discussed that what is the protocols, what are those protocols that are being used at the network layer, and that is on one famous protocol framework that is called IPsec, that included two different protocols, that is authentication header, and we have ESP, that is encapsulated security payload. और हमने ये देखा कि IPsec प्रोटोकॉल के क्या फीचर्स है, हमने ये देखा कि IPsec प्रोटोकॉल जो है वो उसके कितने मोड्स हैं, टनल मोड है और ट्रांसपोर्ट मोड है, और फिर हमने ये देखा कि उनके हेडर्स कैसे काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो मैंने शुरू में आपको कुछ की एरियाज बताए थे, जिनको मैंने अंडरलाइन करवाया था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द working of authentication header and ESP, and as well as security associations. So what are these, the importance of these, and what are the framework and architecture of the headers of these protocols? We will discuss it in the next class. So thank you very much, students.